Hello students, welcome to Krishnas Maths. So till last lecture हमने कौन करते देखो till last lecture हमने exercise 3A of LPP we have completed and exercise 3B from question number 1 to question number 5. फर्स्ट वीडियो टाइम अपलोड कर सारी आ कहीं ना ए चैप्टर जेई रे क्वेश्चन आसुनी तो ए चैप्टर जेई वीडियो आसोनी राइट तो नेक्स्ट चैप्टर जोटा आसो अगेन मैट्रिसेस डिटरमिनेंट से सब जेई लेक्चर आसो आ जदी चैनल रे नुआ अछन चैनल टा कोन कर दियो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माने एल एंड एस स्क्वायर कर दियो आ बेल आइकन टा प्रेस कर दोते बेल आइकन टा प्रेस कर दे नुआ नुआ वीडियो रो जो नोटिफिकेशन आसो आपनो मिल कर या पर हम जो चैप्टर गुडा को करिवा तार तो जेई वीडियो आसो 2019 20 21 रो हम वीडियो गुडा अपलोड करिवो along with that जो चैप्टर गुडा हम ऑलरेडी डिस्कस हे छै जेमति इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हेला एंड रिलेशंस एंड फंक्शन से चैप्टर रो एक्सरसाइज सहित बेसिक कांसेप्ट एंड जेई लेक्चर मध्ये हम अपलोड कर सक ठीक है अबे हम चलीबा आ जो चैप्टर पढुथु से चैप्टर सहित तार जेई टा मध्ये पढिथु हां so that जेमति हमरो नवंबर सुधा पोर्शन टा सरियो पोर्शन सरले will not have much time in your hands to prepare with for जेई तो एबुटू जति टिके टिके करि रखिथियो बोल सेतोल हम जो क्रैश कोर्स उड करिवा जेई पे सेतरे सब ठीक ठाक हे ठीक अछि at least 15 to 17 questions out of 25 you can able to solve तो एबे जेति 12th रो चैप्टर होती 12th रो चैप्टर हमें जेई कर दू हम टीम कथा आइछु आ सेमति 11th रो मध्ये हमें स्टार्ट करतु 11th रो स्टार्ट करले 11th रो बोर्ड रो पोर्शन सहित हमें 11th रो मध्ये जेई कर दू तो आपण कोन करियो 11th रो जदी बोर्ड रो को चैप्टर डाउट होते तो 11th स्टैंडर्ड लेक्चर उडा लिख करियो along with that तार जेई लेक्चर्स तो मस्त देखियो ठीक अछि आ चैनल टा को शेयर कर दो सो दैट इट विल रीच टू द ऑल द ऑडियंस चलो अब लेट करियो स्टार्ट करियो हमरो वीडियो क्वेश्चन नंबर 6 रो हम कर ठीक अछि चलो मैक्सिमाइज z = 50x1 + 60x2 subject to x1 + x2 less than equal to 5 x1 + 2x2 greater than equal to 4 तो कौन हमारा फर्स्ट स्टेप कंसीडर ऑल द इनइक्वेशंस consider all the inequations as equations so x1 plus x2 is equal to 5 so this will be your equation number 1 and x1 plus 2x2 this will be equal to 4 and this is your equation number 2 so for the first equation जदि x2 को 0 कले x1 हेगला 5 at least दुईटा पॉइंट दरकार and जदि x1 को 0 कले x2 हेगला 5 so these are the 2 points to draw the first straight line second pi points कौन करिए second pi points है जो जदि x2 को 0 कले x1 will be equal to 4 and जदि x1 को 0 कले 2x2 is 4 and x2 will be equal to 2 तो गोटे स्ट्रेट लाइन 5,0 एंड 0,5 को जॉइन करियो आ गोटे स्ट्रेट लाइन 4,0 एंड 0,2 को स्ट्रेट जॉइन करियो जेटा ड्रॉ द ग्राफ फर्स्ट प्रथम हम ग्राफ टा ड्रॉ कर दो तापर आगु करियो फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट लाइन देखो 5,0 एंड 0,5 ये दुटा पॉइंट हम पुट कर दो दिस इज योर 5,0 let it be 5,0 and this will be your 0,5 around here this will be your 0,5 तो 5,0 हे गला और 0,5 वाला ए दुटा पॉइंट को आगे जॉइन करके हमें गोटे स्ट्रेट लाइन बना दो ठीक अछि दैट्स इट एटा हेगला हमर फर्स्ट स्ट्रेट लाइन सेकंड स्ट्रेट लाइन टा जोडा हबो से को पॉइंट को जॉइन करछु ठीक देखो से जॉइन करछु 4,0 एंड 0,2 4,0 4,0 टा कोठे रहबो 4,0 रहबो अराउंड 8 8 रहला 4,0 and 0,2 will be 8 this is 0,2 एटा को पुनी जॉइन कर दो तो ये हेगला 4.0 तो एटा हेगला तमर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2 फिजिबल रीजन हम देखबा फिजिबल रीजन पे हम कोन देखबो अपडे फर्स्ट लाइन रो इनइक्वेशन रो साइन कोन अछि लेस देन इक्वल टू माने फर्स्ट लाइन रो इनर रीजन और सेकंड लाइन ग्रेटर देन इक्वल टू माने तारो आउटर रीजन ठीक अछि
तो फर्स्ट लाइन रो इनर रीजन और सेकंड लाइन रो आउटर रीजन मतलब एटा फर्स्ट लाइन रा यार इनर रीजन और सेकंड लाइन रा जोटा यार आउटर रीजन सो दिस इज योर फिजिबल रीजन तो कौन सी पॉइंट बाहर करिया दरकार नै गोटे पॉइंट एठी अछि 4,0 गोटे पॉइंट एठी अछि 5,0 गोटे पॉइंट एठी अछि 0,5 आ गोटे पॉइंट एठी अछि 0,2 ठीक अछि सो फिजिबल रीजन रो जो एंड पॉइंट अछि से एंड पॉइंट गुडा के गेला 0,5 5,0 0,2 एंड 4,0 सो देखो पहले एक्सट्रीम पॉइंट कौन है गेला सो ये पॉइंट है गेला आपन मनकर ए एटा है गेला ए that this point is your A, this will be B, this is your C and this is your D. सब पॉइंट हम बार अछि किछि फाइंड करियो दरकार नै सो द एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन आर the extreme points of the feasible region are A 4,0, B 5,0, C 0,5 and D 0,2 ठीक है सब मिल गला तापर हम कोन करे z रो वैल्यू बात करबा सिंस z is equal to 50x1 plus 60x2 therefore z at गोटे पॉइंट बाहर करे z at a रो कोऑर्डिनेट कोन अछि प्लान 4,0 नै कि तो a रे हम आगे बाहर करे z at 4,0 therefore z is equal to 50 into 4 plus 60 into 0 so 50 into 4 will be 200 plus 0 which is equal to 200 right therefore z at b माने 5,0 therefore z is equal to 50 into 5 plus 60 into 0 so second term that is 0 so this will be 250 plus 0 and that is equal to 250 therefore z at c which is your 0,5 so therefore z equal to 50 into 0 plus 60 into 5 so 50 into 0 will be 0 60 into 5 will be 300 so answer is 300 similarly z at d and that will be your 0,2 therefore z is equal to 50 into 0 plus 60 into 2 which is equal to 0 plus 60 into 2 will be 120 and that is equal to 120 मिल गला देखो z रो गोटे वैल्यू आसला 200 आ गोटे वैल्यू आला 250 आ गोटे वैल्यू आला 300 and the last value is 120 now अब चेक कर z रो मैक्सिमाइज है ना मैक्सिमम बचा तो मैक्सिमम कते हे गेला 300 हे गेला तो हमें फाइनल आंसर लिखबा so this is your final answer therefore z maximum equal to 300 at x1 is equal to 0 and x2 is equal to 5 eta हेला तमर फाइनल आंसर बुझियला this is your final answer so this is how you can solve an LP by using graphical method चल नेक्स्ट क्वेश्चन करिए कोन दे देखो मैक्सिमाइज z is equal to एतिकी सब्जेक्ट टू तीनटा इक्वेशन दिया है तो अगेन सेम कंसीडर all the inequations as equations that is x1 plus x2 this is equal to 4 let it be equation number 1 तो पॉइंट्स कौन है पॉइंट है 0 कर ले 4 and 0,4 5x1 plus 8x2 equal to 30 this is your equation number 2 x2 को 0 कर देले तो x1 है 6 5x1 30 तो x1 6 and x1 को 0 कर देले this will be 30 by 8 तो 2 रे कैंसिल कर ले 15 और 2 रे कैंसिल कर ले 4 15 by 4 15 by 4 माने 3.75 करीब करीब 10x1 plus 7x2 is equal to 35 तो पॉइंट्स कहते गेला x2 को 0 कर ले हमें so this will be 3.5 35 by 10 which is 3.5
and x1 को 0 कले x2 will be equal to 5 ठीक है now graph टा बने दो graph रे point कौन कौन रहला 4, 0, 0, 4, 6, 0, 0, 15 by 4 and 3.5, 0 and 0, 5 तो maximum 6 पर्यंत दरकार x axis है and 5 पर्यंत चलो ग्राफ टा बनेगा बुझिला ना first point 4, 0 let it be here 4, 0 and 0, 4 0, 4 एटी गोटे पॉइंट है आ गोटे पॉइंट है एट ए दुईटा पॉइंट को आगे आम जॉइन कर ठीक अच्छे चलो so this is equation number 1 second line पे 6, 0, 0, 15 by 4 15 by 4 माने 3.75 तो 6, 0 and 3.75 15, 0 6, 0 वाला पॉइंट को 4 माने 8 कर दो 6 तक 6, 0 and 8 है 2 this has to be 2 and this will be 3 3.75 man around 8 15 by 4 और 6, 0 है 8 बहुत क्लोज अच्छे this will be equation number 2 next third equation पे points देख दो point कौन अच्छी 3.5, 0 and 0, 5 so this will be 2 this is 3 3.5 and 0, 5 0, 5 माने around 8 so this point is तो A point है 0, 5 और A point है कौन था 3.5 3.5 3.5 ठीक है तो ये गोटे पॉइंट है जॉइन कर देले तो आप देखिबा रीजन कौन है रीजन अच्छे लेस देन सबुर लेस देन अच्छे ठीक है सबुर लेस देन थिले so this point is 0, 5 and this point is 3.5 सबुर कौन अच्छे लेस देन अच्छे सबुर लेस देन थिले इंटर रीजन हबो ए पॉइंट हबो आउ गोटे ए पॉइंट हबो ए पॉइंट हबो this and this तो एटा को जदी पॉइंट हम ए कहले पॉइंट को ए the point को B this will be C and this will be D 2 3 the extreme points of feasible region are एटा होती इक्वेशन नंबर 3 अपन एटा भी लिख देबे ठीक है
This will be equation number 3. Now feasible region कोड A है गला 3.5, 0. तो A रो कोऑर्डिनेट है गला 3.5, 0. आउ D रो कोऑर्डिनेट 15/4. 6, 0 को 15/4 को ऐड कर. तो D रो कोऑर्डिनेट है गला 15/4, 0, 15/4. D है गला. Now for B का इंटरसेक्शन देखो. B होची इक्वेशन 3 या 1. And for B, solving one and three. Solving 1 and 3. 1 is x1 plus x2 equal to, चलो जी 1 is x1 plus x2 ना, या and 3 is 10x1 plus 7x2. तो 1 टाको हमें 7 रो मल्टीप्लाई करना. तो इक्वेशन 1 into 7 will be 7x1 plus 7x2 equal to 7 into 4 will be 28, and equation 3 into 1 will be equal to 10x1 plus 7x2 equal to 35. और इधर देखिए 4 अच्छी 28 है गला. एटा को हमें किसी कोऑर्डिनेट थर्ड टाको 10x1 7x2 35. ठीक है, चलो अभी माइनस कर दियो. माइनस 7x2 कैंसिल हो गया. 7 minus 10 is minus 3x1. 28 minus 35 will be minus 7. So x1 will be equal to 7 upon 3. Using in 1 to use कर दो. Since x1 will be 7/3 plus x2, and that is equal to 4. So what about x2? x2 equal to 4 minus 7 upon 3. So 12 minus 7 will be equal to 5/3. Therefore B will be equal to 7/3, 5/3. Now for C is the intersection of 1 and 2. So for C, solving 1 and 2. अब देखो 2 इक्वेशन का कौन हो 5x1 plus 8x2. तो फर्स्ट को 8 मल्टीप्लाई कर दो. फर्स्ट को 8. इक्वेशन 1 into 8 implies 8x1 plus 8x2 equal to 8 for the 32, and the second one is 5x1 plus 8x2 is 30. So 5x1 plus 8x2 is equal to 30. So let us subtract. So 8 cancel. 8 minus 5 is equal to 3x1, and this is equal to 2. Therefore x1 is equal to 2/3. Now again using in 1. So this will be equal to 2/3. This will be equal to 2/3, that is x1 plus x2 equal to 4. So x2 will be equal to 4 minus 2/3. 12 minus 2. 12 minus 2 मतलब 10/3. Therefore C is 2/3, 10/3. Since Z is equal to Z कौन से 5x1 plus 7x2. 5x1 plus 7x2. So Z at A, which is your A कौन था? A coordinate टा हमारा थिला 3.5, 0. A will be 3.5, 0. Therefore Z equal to 5 into 3.5 plus 0. 5 into 3.5 will be 17.5. Similarly Z at B, and B is equal to 7/3, 5/3. So therefore Z is equal to 5 into 7/3 plus 7 into 5/3. 7 5 is 35, 7 5 is 35. 35 plus 35, 70/3. Then Z at C. C मतलब 2/3, 10/3. So this is equal to 5 into 2/3 plus 7 into 10/3. 5 into 2/3. So 5 into 2, 10. 7. This will be 70 divided by 3. So this will be equal to 80/3.
Similarly, Z at D, and D coordinates are 0, 15 by 4. 0, 15 by 4. Therefore, Z is equal to, what is that? 5 into 0 plus 15 into 15 by 4 into 7. 15 into 7 will be 105 by 4. 105 by 4. So 26.25 around. 17.25. And 80 by 3 money 26.3. Look, 80 by 3 matlab 26.6 something. And this is 70 by 3 matlab 23 into 3 will be 69. 23.3, 26.3, 17.5, and this will be 26.25. 26.25. So what do you ask? The maximize. Maximize is Z maximum equal to both close of the value would have Z maximum is equal to, this is 26 upon 6, 23, 17 and 26.25. So 80 by 3. Z maximum equal to 80 by 3 at x1 is equal to 2 by 3 and x2 is equal to 10 upon 3. So जितने MPT के close value आसो टिक के देखिएगा. So this is your final answer. Okay. ठीक है, लेंदी सम थिला काइना तीनटा इक्वेशन हेगला सब सॉल्व करियो पड़े. ठीक अछि. जिबा next question 8. Maximize Z is equal to 14x1 minus 4x2. Same first step. Consider all the inequations as equations. So this is x1 plus 12x2 is equal to 65. So this will be 65, 0 and 0, 65 divided by 12. 7x1 minus 2x2 equal to 25 points. x2 को 0 कर देना, so this will be 25 by 7 and x1 को 0 कर देना, तो minus 25 by 2 and 2x1 plus 3x2 equal to 10. So this is 0, 5 and 0, 10 upon x1 को 0 करिए x2 आने x2 को 0 करिए x1 आने 1, 2 and 3. Let us draw the graph now. 65, 0 and 0, 65 by 10. First point 65, 0 and 0, 65 by 12. 65, 0. Let it be here. 65, 0 and 0, this. 65 by 12. 65 by 12 means 6 point something. So this is 65 by 12. Now join these two lines to form a line. Equation number 1. Then second 25 by 7. 25 by 7 means around 3 point something. And 0, minus 25 by 12. 25 by 7 means 3 point something. 25 by 7 and 0, 25 by minus 25 by 2 means 12 point something. So this minus 25 by 2, correct, 25 by 2. Now let us draw a line which will join these 2 points. So this is equation number 2. Now third line 5, 0, 0, 10 by 5, 0, 25 by 7 means 4.
here it will be 5, something around here, 3 point something na. So this will be 5 huh? 5, 0, 0, 10 by 3, 10 by 3 means 3 point something, 6 point something thila seta first ta to tolku asyo 3 point something mane this and this. Now this is equation number 3. Now अब देखिए inequality, inequality कोठी less than अच्छी कोठी greater than अच्छी, first line is less than less than, so this is the first line, तो first line तो less than, first line तो less than वन थोड़ा बस ले, second line तो देखिए less की greater, second line देखो, second line is also less than, second line less than मान origin वाला side 8 है, second line less than. Now what about the third line? Third line is greater, okay, third line is greater मान ऊपर it a third line, so this is the feasibility. So extreme points are this, this, this and this. So the extreme points are this, 8 of the extreme point, 8 of the extreme point, intersection 8 of the extreme point, 8 of the extreme point. So the real extreme point अभी यार सब कोऑर्डिनेट बाहर करियो पड़ियो. Now देखो ठीक है ला extreme points बाहर करियो आगे. So the extreme points of the feasible region are extreme points of feasible region are what is the third line row y coordinate, third line row y coordinate common 0, 8 by 3. Let it be a abcd करते, this will be a, eta b, eta c, eta d. The third line row x coordinate will be d, third line row y coordinate will be 0, 10 by 3 and this is your d, this will be d. Then first line row y coordinate, first line row y coordinate will be 0, 65 by 12 and that will be your c. Now for a you have to solve equation 2 and 3. For a solving 2 and 3. So what is 2? 2 is 7x1 minus 2x2. ठीक है, तो इक्वेशन 1 रे अछि 12x2 8 रे अछि 2x2. तो सेकंड को हम कौन करबा 6 रे मल्टीप्लाई करबा, फर्स्ट को एज इट इज रखबा, फर्स्ट into 1 implies x1 plus 12x2 equal to 65 and 2 will be multiplied by 6 to give you 7 6 42x1 and 2 into 6 will be minus 12x2, 25 into 6 will be 150. ठीक है, x1 plus 12x2 65 आपको 7 रे कर ले, आपको 6 रे कर ले, 7 6 42, 6 into 2 will be 12, 6 into 25. Now add, plus minus अच्छे add कर दे cancel होगा, so this will be 43x1 equal to, when you add these two, this will be 5 and 6 plus 15 will be 21, 6 plus will be 31, 21. So x1 equal to 215 divided by 43, I think 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, exactly 5. तो 5 तक को x1 रे कर दिए, 1 रे पुट कर देना, 1 रे जितना पुट करिए, this will be 5 plus 12x2 equal to 65. 5 को सही पटन नहीं गले, x2 is again equal to 5, x2 is again equal to 5. मैंने हमें कौन सी बात सॉल्व करते हैं, a which is 5, 5. Now for b equation 1 and equation 2, for b solving 1 and 2. So for b solving 1 and 2, देखिए तो वाटी को 1 कौन अच्छे, x1 plus 12x2 and 82x1. तो equation 1 टाकू 1 and 2. For a solving 2 and 3, a कले अभी 1 and 2, 1 and 2 सॉल्व करिया, 1 and 2 पे कौन करिया, देखो a पे हम कौन करते सॉल्विंग 2 and 3 कर दे, तो 2 and 3 सॉल्व कर ले हमको a मिलला, 2 and 3 ना,
2 and 3 ठीक अच्छे। तो आम कौन सॉल्व कर देले 1 and 2 शायद आम सॉल्व कर देले 1 and 2 को सॉल्व कर देले। तो जदि 1 and 2 को सॉल्व करिवे तो एटा बी मिलियो कौन मिलियो एटा बी और बी एमती लिखि दियो फॉर बी सॉल्विंग 1 and 2 तो एठी बी कौन आसीबो तमरो बी आसीबो एठी आसीला बी तो एबे ठीक हे गेला ठीक अछि एटा हे गेला तमरो बी कोऑर्डिनेट। एबे ए कोऑर्डिनेट पय 2 and 3 को सॉल्व करियो फॉर ए सॉल्विंग 2 and for a solving a by का सॉल्व करे 2 and 3 solving 2 and 3 तो 2 टा कोन अछि 2x2 एठी अछि 3x2 तो 2 टा को 3 रे मल्टीप्लाई कर दबा आ 3 टा को 2 रे 2 टा को 3 रे equation 2 multiplied by 3 so 7 3 is 21 x1 minus 3 2 is 3 into 2 na 3 into 2 6 equal to 3 into 7 3 is 21 3 into 2 6 x1 equal to 25 3 is 75 गोटे थोड़ा चेक कर दो 21 6 75 आ याकू कोन करबा हमने याकू 2 रे मल्टीप्लाई करबा तो 4 6 20 इक्वेशन 3 टाकू 2 रे मल्टीप्लाई कर देले 4 6 20 देख दे 4 6 20 बट बीच रे प्लस अछि तो याकू ऐड कर देले कैंसिल हो गेला 21 plus 4 will be 25 x1 equal to 75 plus 2 will be 95 so x1 equal to 19 by 5 now equation 2 रे सब्स्टिट्यूट कर दो equation 3 रे कर दो using in 3 x1 2 into 19 by 5 plus 3x2 equal to 10 plus 3x2 equal to 10 19 to the 38 by 5 plus 3x2 equal to 10 so 3x2 equal to 10 minus 38 by 5 5 into 50 minus 38 so 12 by 5 so x2 equal to 3 रे कट कर दो 4 by 5 so 19 by 5 comma 4 by 5 this will be the coordinates of A 19 by 5 comma 4 comma 5 we got all the values now therefore z at since z is equal to z कितना थिला देखो 14x1 minus 4x2 14x1 minus 4x2 so therefore z at A is 19 by 5 comma 4 by 5 14 into 19 by 5 minus 4 into 4 by 5 okay 14 into 19 14 नुआ 126 6 12 14 1 14 12 26 minus 16 divided by 5 so this will be 250 divided by 5 which is equal to 50 similarly z at that's like A B will be your 5 comma 5 na z at B 5 comma 5 therefore z is equal to 14 into 5 minus 4 into 5 70 minus 20 will be equal to 50 है ना similarly z at C कौन है देखो C माने 0,65 by 12 0,65 by 12 so z is equal to this is 0 minus 4 into 65 by 12 तो 4 रे कैंसिल करले 3 हे गेला तो minus 65 by 3 similarly z at D is 0,10 by 3 D is 0,10 by 3 so therefore z is equal to 0 minus 4 into 10 by 3 so 40 by 3
minus 40 by 3. So this is equal to minus 13.3. So maximize. Maximum कौन होला देखो 80 गोटे 50 होला 80 भी गोटे 50 होला बाकी दुटा नेगेटिव. Therefore z maximum equal to 50. को पॉइंट लिखो दीटा गोटे a point माने a and b. Z maximum at a as well as b. At a and b. So this is the 9th one. तीनटा इक्वेशन आसिले टिके लेंदी हे जो क्वेश्चन नै कि. नेक्स्ट maximize z equal to 10x1 2x2 8x3. हाँ x3 हम दरकार नहीं कहीं ग्राफिकल मेथड दीटा वेरिएबल रहो तो x3 को हमको हटेबा पड़ो केमती हटेबा देखिबा x1 plus 2x2 एट दुटा वेरिएबल अछि ओके x1 7x3 8 x3 को हटेबा पड़ो विद द हेल्प ऑफ दिस. हां तो हिंट भी देतो एलिमिनेट x3 फ्रॉम ऑल द एक्सप्रेशन यूजिंग द गिवन इक्वेशंस इन द सेट ऑफ कंस्ट्रेंट. तो फ्रॉम दिस इक्वेशन सिंस देखो हम कौन लिखबा x1 plus x2 plus x3 is equal to 20. So what about x3? x3 equal to 20 minus x1 minus x2. Therefore z कौन है गला z equal to 10x1 plus 12x2 plus 8 into x3 ना 8 multiply करो 160 minus 8x1 minus 8x2. 10x1 minus 8x1 will be equal to 2x1 plus 4x2 plus 160. This is z. Subject to first constraint कौन करी सेम रहो काहे से x3 9 x1 plus 2x2 is less than equal to 30 and next will be 5x1 minus 7 into x3 माने 20 minus x1 minus x2 7 into this is greater than equal to 12. So this will be equal to 5x1 minus 140 minus plus 7x1 plus 7x2 greater than equal to 12, which is 5 plus 7 is 12x1 plus 7x2 greater than equal to 152. एबे कौन बन गला क्वेश्चन एमती बन गला मैक्सिमाइज z is equal to कौन आसला z देखो एटा आसला ना z 2x1 plus 4x2 plus 160. कौन कला में ए इक्वेशन रू x3 रो वैल्यू बाहर कर देले और जोठी x3 थला थरे 8 और थरे 80 सब्स्टिट्यूट कर देले राइट. सब्जेक्ट टू कंडीशन कौन अगला x1 plus 2x2 less than equal to 30 and the next one will be 12x1 plus 7x2 is greater than equal to 152. Both x1 comma x2 is greater than equal to 0. Now consider all the constraints, all the inequations as equations. All the inequations as equations. First one is your x1 plus 2x2 equal to 30. Let this will be equation 1. So x2 को 0 कर ले, x1 will be 30 and x1 को 0 कर ले, x2 will be equal to 15. And the second one is 12x1 plus 7x2 is equal to 152. x2 को 0 कर ले 152 by 12 152 divided by 12 and x1 को 0 कर ले x2 will be 152 divided by 7 152 divided by 7. So these are the 2 points to be calculated. ये दुटा पॉइंट को प्लॉट कर दो ग्राफ बन दो ठीक अछि. थर्टी कॉमा 0 0 कॉमा 15 30 comma 0 0 comma 15. Let it be 30 comma 0 and let this will be 0 comma 15. So this is 30 and this is 15. Next 150 12 1 is 12
3 and 2, 12 to the 24, 12 के आसपास, हाँ, around 12 माने 8 जदि 10 हला, 8 जदि 20 हला, 8 10 हबो, 8 20 हबो, तो 80 कोटी 12 हबो. This is 152 divided by 152 divided by 12. 152 divided by 12. So first we'll draw this line. (0, 152 by 7. So 7 2 ja 14, 1 and 2, 7 3 ja 21, 2 and 3, 23, around 15. This 152 by 2 and it account to y coordinate 152 by 7. 152 divided by 7. Now inequality देखो, less than greater than कौन होची? Inequality is the first one is less than equal to and second one is greater than. First one is less than equal to and second one is greater than equal. So this is the feasibility. So 30, 152 by 12 and this is the point to be calculated. Let this point is A, this point will be D and this point will be your C. So A and B हमें जान से C डा में calculate करिए. So the extreme points are A 152 divided by 12, 0, B 30, 0 and for C solving 1 and 2. Now what is 1? X1 plus 2x2 30 and 12x1 plus 7x2. So multiply the first one by 12. Multiply equation 1 by 12. So 12x1 plus 24x2. 30 into 12 will be 360. And equation 2 multiplied by 1. 12x1 plus 7x2 equal to 152. 12x1, 7x2, 152. Now minus कर दो, minus. ये दूटा cancel as 24 minus 7 will be 17x2 equal to 10 minus 2 will be 8 and 5 minus 5 will be equal to 0 and 3 minus 1 will be equal to 2, 208. So x2 will be equal to 208 divided by 17. Now using in 1. So this is x1 plus 2 into x2 na? x1 plus 2x2 equal to 30. 2 into x2 which is 208 by 17 and that is equal to 30. So x1 is equal to 30 minus 208 into 2 will be 416 divided by 17. 17 into 3, 510 minus 416 divided by 17. Okay. So this will be around 84 and 10. 84 and 10 will be equal to 94 by 17. So this is the point C. 94 by 17 and 208 by 17. Now since Z is equal to Z क्या था देख लो 10x1 Z is this. ये हम सॉल्व करी कत से Z टाको x3 को एलिमिनेट कला पर 2x1 4x2 160 2x1 plus 4x2 plus 160. So Z at A and A is 152 divided by
12, 0. So this is equal to 2 into 152 divided by 12 plus 0 plus 160 plus 160. 2, 6. 152 by 6 plus 160. So 150, 16 into 6 will be 960 divided by 6. So 900 and 100, 1000, 1110 divided by 6. So 6 ones are 6, 5 and 1, 51, 6 8 are 48, 3 and 0, and 6 5 are 30. Then Z at B, 30, 0. Therefore Z is equal to 2 into 30 plus 0 plus 160. 60 plus 160 will be 220. Then Z at C, which is 94 by 17, 208 by 17. Therefore Z is equal to 94 by 17 here put करेंगे and x2 को 208 by 17 पुट करो. करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा कैलकुलेशन करके लिखना. 2 into 94. So this will be 2 into 94 by 17 plus 4 into 208 by 17 plus 160. And this comes out to be 3740 divided by 17. अभी एटा को इठे हमें लिखवा कहते हैं 17 तो कट कर ले 17 2 जा 34 3 and 4 34 17 2 and 0 220 है ना. तो Z maximum equal to 220. Z maximum equal to 220 at 30, 0. This is the final answer. Next, minimize Z equal to 20x1 plus 10x2. Consider same method. Consider all the inequations as equations, which is x1 plus 2x2 is equal to 40. Let it be equation 1, 0, 40 and 0, 20. Second one, 3x1 plus x2 is equal to 30. So this is x2 0, so x1 will be 10 and this will be 0, 30. And 4x1 plus 3x2 equal to 60. So this is 0, 15 and 0, 20. Now, graph. First point 40, 0, 0, 40. 40, 0, 0, 40. Let it be 40, 0. And this will be 0, 20. Next. 40, 0, 0, 20. 10, 0, 0, 30. 10, 0, 0, 30. Now draw. So this is equation 2. Equation 2. Now, this is equation 1. And 15, 0. 15, 0, 0, 20. Okay, 15, 0, 0, 20. So 1, 2 and this will be equation number 3. (15, 0, 0, 20). Okay. Now the graph is done. So first line less than, second greater than, third greater. So look, this is the first line. यहाँ पे less than, यहाँ पे greater than, यहाँ पे greater.
So this is your feasible region. So let this point is your A, this point will be your B, this point will be your C, and this point will be your D. So this is the feasible region. The extreme points. So the extreme points of the feasible region are A 40, 0 and D will be 15, 0. For B, solving 1 and 2. For B, solving 1 and 2. Why? Because B is here, na? 1 and 2. And 1 is x1 plus 2x2, and 2 is this, and 3 is this. So x1 plus 2x2, 1 into 1. So x1 plus 2x2 equal to 40. 1 into 1. And 2x2, na? Equation 2 multiplied by 2. So this will be 6x1 plus 2x2 equal to 60. Minus x1 minus 6x1 will be minus 5x1. So this will be minus 5x1 equal to minus 20. So x1 is equal to 4. So this has to be 4 using in 1. So 4 plus 2x2, na? 2x2 equal to 40. 4 plus 2x2 is equal to 40. So 2x2 equal to 36. So x2 is equal to 18. So therefore B is 4, so B is 4, 18. And for C solving these 2 and 3. For C, solving 2 and 3. That is, what is 2? 3x1 plus x2 equal to 30, and this. So multiply 2 by 3. Multiply 2 by 3. So that will be 3x1. Multiply 2 by 3, na? So 9x1 plus 3x2 equal to 90. 9x1. 9x1 plus 3x2 will be equal to 90. And what about 3? 4x1 plus 3x2, 60. So 4x1 plus 3x2 equal to 60. So equation 3 multiplied by 1. So 9 minus 4 will be 5x1 equal to 90 minus 60 will be 30, and x1 equal to 6. Now using in 3, so 4 into 6 plus 3 into x2 equal to 60. 4 6 are 24 plus 3x2 equal to 60. So 3x2 equal to 60 minus 24, and this will be equal to 36. So x2 will be equal to 12. So C coordinate, C coordinate equal to 6, 12. Now find Z. Now find Z. Since Z is equal to, what was Z? Z is 20x1 plus 10x2. This is 20x1 plus 10x2. Therefore Z at A. Where is A? 40, 0, 50, 40, 0. Therefore Z is equal to 20 into 40 plus 0. So 800. Similarly Z at D. 15, 0. So Z equal to 20 into 15 plus 0. So 300. D 15, 0, na? Then B is 4, 18.
तो z at b which is your 4,18. So z is equal to 20 into 4 plus 10 into 18. 20 into 4 will be 80 and this is 180 which is equal to 260, and z at c which is 6,12. So 20 into 6 plus 10 into 12. 20 into 6 will be 120 plus 120 equal to 240. What do you ask? Minimize z. Z minimum equal to 240 at x1 equal to 6 and x2 is equal to 12. So z minimum is 240 at x1 equal to 6 and x2 equal to 12. So this is your final answer. तो अगला क्वेश्चन नंबर 5 पर्यंत हम कर देते आज 6 7 8 9 10 कल हाँ. सो नेक्स्ट वीडियो में 11 12 13 14 and 15 आम सॉल्व करिया. ठीक अछि. आउ जदी जेई लेक्चर देखुथिबे चैनल रो नुआ थिबे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे एंड बेल आइकन को प्रेस कर दे सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फॉर अपकमिंग वीडियोस. नेक्स्ट लेक्चर हम यार रिमेनिंग पार्ट करबे चैप्टर सरेबा. नेक्स्ट हमें विल गो टू मैट्रिसेस. ठीक अछि. वीडियो देखुथिबे वीडियो को लाइक करथु हां आ बेल आइकन प्रेस करथु. कॉलेज ग्रुप उडागर मध्ये या शेयर करबे चेष्टा कर. मिजबा नेक्स्ट लेक्चर ये चैप्टर रो ये एक्सरसाइज रो रिमेनिंग क्वेश्चंस को नहीं. हां अंटिल देन बाय बाय.